मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हमारा एफएमएस का लास्ट लेक्चर है और इसके पहले के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया ऑलमोस्ट सारा कुछ जो एफएमएस के सिलेबस में था, राइट, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कुछ कंप्लीट हो गई है। तो आज जो है वो मैंने पहले ही दिन जो वीडियो दिखाया था वो मैंने बोला था कि एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो जो वीडियो था यूट्यूब वीडियो, राइट, एक पूरी प्रोसेस जो वहाँ पे आपको दिखाई गई थी कि एजीवी जो है वो पर्टिकुलर प्लेस से मूव हो रहा है, दूसरे प्लेस पर जा रहा है, सीएनसी पर जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है, राइट। तो एजीवी किस तरह से वो मूव कर रहा है, उसके बाद में एएसआरएस पर मतलब पैलेट वहाँ पे है, पैलेट पर पार्ट लगा हुआ है, राइट। तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है पूरा वो एक वीडियो देखेंगे। और एक जो है वो एक वेयर हाउस है, मतलब अलग दो तीन इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे वो एजीवी एंड एएसआरएस मटेरियल हैंडलिंग के लिए कैसे यूज़ हो रहे हैं वो पूरा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं उस वीडियो से। होप सो आपको वो वीडियो जो है वो पसंद आएगा। The heat of fire, the humbleness of sand, basic elements on which Porcelanosa has built a solid business group, which covers all sectors of ceramics, from tiles to solutions for the most contemporary of architecture. 5 logistics centers in Castellón are the result of years of close collaboration with Mechalux, which has designed and implemented the best solutions for each project, providing innovation, technology, and excellence in each one. 3 words that sum up their working philosophy and turn them into the best allies of a large group like Porcelanosa. Mechalux took its first steps in this great project with the Porcelanosa Logistics Center in 2003, followed by the Seranco Center. 6 years later, the Lante Colonial and Nokin centers were built. And finally, Venice in 2011. Venice, a pioneering flooring company with a wide variety of types and finishes, is the last of the 5 logistics centers built by Mechalux for the Porcelanosa Group. This center is fitted out with the most recent technological developments present in each and every part of the circuit. The cycle starts with the pallets with the finished product. These mostly come from the production center connected to the silo through an underground tunnel more than 1 kilometer long. Monitored along their route by Mechalux's easy warehouse management software, they are lifted onto the double lifts that allow 2 pallets of up to 1,600 kilograms each to be loaded until they reach the aisle entrances of the store. In addition to the tunnel entrance, the store has another auxiliary entrance for pallets from other centers. The pallets are moved on the roller and chain conveyors to the identification point where Mechalux's easy warehouse management software controls any incident. Here, each pallet is measured and weighed, and it is made sure that they are in perfect condition. The auxiliary entrance is also used for bringing in empty pallets. Both these and those from other centers comply with rigorous quality control. Venice Silo, 7,000 square meters, 31 meters high, and with a capacity to store 65,000 pallets. ये जो आपको The दिख रहा है silo वो पूरा structure ये सारे comprises सिस्टम 10 है। aisles, where 10 twin-mast stacker cranes circulate and lift the pallets to place them strategically following the orders of the Mechalux Easy Warehouse Management software.
ये जो है वो क्रेन है जो मूव हो रही है पर्टिकुलर पार्ट को पर्टिकुलर रो में, मतलब जहाँ पे आपको प्लेस करना है, जहाँ पे पूरा The लोकेशन faster उसका rotating डिफाइन है, goods वहाँ पे are मूव हो रही placed है। closer to the aisle entrance. The twin-mast stacker cranes operate at a speed of up to 180 meters per minute and are able to perform as many as 237 combined cycles. The stacker cranes are capable of recovering an average value of 50% of the energy consumed for self-consumption. This logistics center project, created by Mechalux, especially in accordance with Venice's needs, also has space for future extensions to be built. Goods delivery has also required specific solutions from Mechalux, both for the more complex picking zone and that of full pallets. Eight work posts have been set up in the picking zone, able to prepare a total of 31 orders at the same time. Pneumatic arms allow operators to handle the load effortlessly, facilitating movements with weight and speeding up the whole process. The tables are fitted with height-adjustable hydraulic systems for greater ergonomics for workers. The Mechalux Easy Warehouse Management software controls the preparation and dispatching, enabling 4 orders to be completed at a time at each picking post. 2 double shuttles run along the picking aisles, keeping the safety distance and distributing the loads on the output tables. All details count in the Venice Logistics Center. Mechalux built a tunnel in Venice to connect the picking zone with the dispatch area to avoid the shuttle circulation area. The delivery zone has 2 areas for full pallets and another 2 for those coming from picking. The full pallets are distributed along 6 lines on either side of the silo. Those coming from the picking zone are wrapped to be shipped. The large variety of Porcelanosa products has generated specific requirements in some of the group's logistics centers. This is the case of L'Antique Colonial, where the parquet flooring is stored in large, wrapped flat packs, requiring double pallets for storage. Mechalux has designed lifts, stacker cranes and picking posts, especially for these unconventionally large items. In the case of Nokin, another of the companies of the Porcelanosa Group, which stores small products as a manufacturer of tapes and bathroom units, Mechalux designed an automatic warehouse for boxes instead of pallets. A solution that provides greater agility in goods input and output. This is the daily work of the logistics centers of the Porcelanosa Group, a company that has risen as a benchmark of quality and innovation at the service of logistics, a challenge taken on by Porcelanosa and Mechalux, now more than 15 years ago, materialized in the 5 automatic logistics centers built to date. Mechalux and Porcelanosa, a long trajectory offering the best products to their customers. Mechalux technology and experience for the Porcelanosa Group. ये जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में जो वीडियो देखा था एफएमएस के रिगार्डिंग, वो है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे वो पैलेट्स है और ये पूरी सिस्टम ASRS है। ये देखो सिंपल लैब मॉडल है, इसीलिए मतलब ASRS जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही छोटा है।
ये जो है पैलेट वो भी छोटा है, राइट। बट ये समझने के लिए कि एक बार आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है देन ओके। ये जो है वो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, ओके। और ये लोडिंग अनलोडिंग एजीवी के साथ लोडिंग अनलोडिंग डिवाइस जो है वो अटैच किया हुआ रहता है। तो अनलोडिंग कन्वेयर है, राइट। तो अनलोडिंग हो गया, उसके बाद में पैलेट जो है वो कन्वेयर थ्रू पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पे रखना है वहाँ पे वो पहुँचता है, राइट। तो ये हो गया एजीवी पर मूव, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि गाइड हो रहा है, व्हीकल जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पर गाइड हो रहा है, पर्टिकुलर वे पर गाइड हो रहा है, राइट। ये जो है सीएनसी मशीन, सामने जो सीएनसी लेते हैं, राइट, उस पर जो भी प्रोसेस करनी है उसके लिए एजीवी जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पर क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, राइट। और उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी प्रोसेस के लिए उसको सीएनसी पर मूव होना है वहाँ पर। ये जो है वो 2 एक्सिस लोडिंग अनलोडिंग आर्म है कि पर्टिकुलर प्लेस पर आपको अगर लोड करना है अनलोड करना है, राइट। तो 2 एक्सिस हैं, मतलब 2 एक्सिस में ये वर्क करता है, राइट। अभी देखा आपने कि ये एक मतलब रोटेट हो रहा है, राइट। तो उस हिसाब से वो वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसको कवर कर रहा है, ओके। अभी देखो एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो गई कि उसने पार्ट को क्या किया, एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया। सपोज वाई डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल है, राइट। तो एक्स डायरेक्शन जो है उसमें उसने पार्ट को क्या किया, मूव करके अनलोड कर दिया। सीएनसी में पर्टिकुलर प्रोसेस जो कंप्लीट करनी है उसके लिए टूल और वो सब पहले से प्रोग्राम है। तो सीएनसी पर पर्टिकुलर ऑपरेशंस हो जाएंगे, उसके बाद वो अनलोड हो जाएगा।
ये जो लैब है, इस तरह की लैब आईआईटी मद्रास में अवेलेबल है। पूरे इंडिया में एक ही वो कॉलेज है जहाँ पे ये लैब जो है वो अवेलेबल है। ये जो पार्ट है वो सीएनसी लेथ से सीएनसी मिलिंग मशीन पर मूव हो रहा है। तो हर एक मशीन के साथ पैलेट कन्वेयर जो है वो अटैच है, क्योंकि पैलेट जब भी एजीवी से अनलोड हो रहा है तो उसको पर्टिकुलर मशीन पर लोड करने के लिए कुछ तो वहाँ पे अटैचमेंट चाहिए, इसीलिए हर एक जगह पर पैलेट कन्वेयर जो है वो प्रोवाइड किया होता है।
ये जो सारे वो न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स ही रहते हैं जो आप OHP में अभी स्टडी करोगे कि किस तरह से वो वर्क होते हैं। तो पैलेट का मतलब यहाँ पे है कि वो वर्कपीस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। काफ़ी सारी जगह पे वो बंच भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बॉक्स भी हो सकता है, राइट, बट इट इज़ द वन यूनिट। ओके, और ये फाइनली कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस होने के कंप्लीट होने के बाद ASRS की जहाँ पे उसको कंप्लीट होने के बाद प्लेस करना है, जहाँ पे उसको रखना है। होप सो आप सभी को ये वीडियो जो है वो पसंद आए होंगे और FMS जो है वो कम्प्लीटली आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इस चैप्टर के बाद की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर लेना, और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है FMS कैसे वर्क कर रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज मैसेज भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, राइट। बट इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखना कि ये किस तरह से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो वर्क कर रही है, उसमें कौन से टॉपिक्स है,
राइट। देखो ये जो है वो वीडियोस जो है वो स्पेशली आपके लिए ही बने हुए हैं। तो अगर आप इसका बेनिफिट नहीं उठाओगे तो देखो बाहर के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट भी ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमारे वहाँ वीडियोस जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहे, तो उनको भी मैं ये वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो समझो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बने। फिर अगर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है, राइट, कि आप के लिए स्पेशल जो चीज़ बनी हुई है उसका भी आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो, राइट। तो होप सो आपको ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली समझ में आए होंगे। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें एक वेयर हाउस था, राइट। वो वेयर हाउस में काफ़ी सारे उनकी प्रोडक्ट्स जो थी उसको वो लोग क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। लोडिंग अनलोडिंग के स्टेशंस बने हुए थे और पैलेट जो थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट थे। उन्होंने कुछ 2003-4 में पहली कंपनी जो थी वो स्टार्ट की थी। उसके बाद में उन्होंने टोटल 5 कंपनीज जो थी वो स्टार्ट की हुई है। उसमें जो एक जो कंपनी थी उसमें उन्होंने पैलेट की जगह बॉक्स रखे हुए थे और बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनके पार्ट अलग से थे उनको प्लेस किए हुए थे। तो वो जो वीडियो था उसमें ASRS सिस्टम जो थी और AGV जो सिस्टम है वो पूरी तरह से मतलब मटेरियल हैंडलिंग किस तरह से पॉसिबल है और प्लानिंग आप किस तरह से उसमें कर सकते हो वो पूरा कुछ दिखाया था। तो होप सो आपको वो वीडियो भी पसंद आया होगा। और सेकंड जो वीडियो था वो पर्टिकुलर एक IIT की लैब जो है वहाँ का था, कि वहाँ पे पूरी FMS की एक लैब जो है वो डेवलप की गई है और वहाँ पे CNC लेथ मशीन, CNC मिलिंग मशीन और उसके बाद में AGV जो है वो मूव करते हुए बेरिंग हाउसिंग की ओर बढ़ता है और फाइनली ASRS में मूव होता है। तो ASRS में भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स जो थे वो भी वहाँ पे दिखाए थे, राइट। तो कुल मिला के जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और एंडिंग जो वीडियो है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, मतलब 100% वो वीडियो भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।